Hi, this is Mohammed Mukherjee and welcome to my YouTube channel. I love electrical engineering. Today I will discuss in very two important interview question on transformer. Transformer के ऊपर दो very important question and answer के ऊपर today I will discuss. The first question is what happened if you will feed DC voltage in transformer? We know transformer is basically working on AC system. A step down and step up करता है AC voltage को. But what happened if we will feed the DC voltage in transformer? And second question is if we use the 50 Hz design transformer to 60 Hz system or vice versa. Mean what happened if we use the 50 Hz design transformer to 60 Hz or 60 Hz design transformer to 50 Hz. Today I will discuss on these two topics. So first, what happened if we will feed the DC voltage in a transformer? So suppose this is a transformer core. This is a primary winding and this is secondary winding. So how transformer is operating? Suppose हम लोग प्राइमरी में एक वोल्टेज इन करता हूँ, V वोल्टेज देता हूँ एंड ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी में हम लोग को एक वोल्टेज मिलता है, सपोज दैट इज U. It depend on the trans ratio and a operating होता है according to the Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction का प्रिंसिपल में काम करके एक वोल्टेज से दूसरा वोल्टेज में लेके आता है, इधर स्टेप डाउन या स्टेप अप करता है वोल्टेज को. सो कैसे होता है? जब हम लोग एक प्राइमरी में वोल्टेज देता हूँ, ये ट्रांसफॉर्मर कोर के अंदर एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है. ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है, कोर के अंदर एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है. ये जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है that is caught by the secondary winding. Secondary winding में वो काट होता है एंड एक ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड उसी ईएमएफ से हम लोग को सेकेंडरी में एक वोल्टेज मिलता है. सो सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी. एन इज द टर्न रेशियो, फाई इज द जनरेटेड फ्लक्स इन वेबर, and t is the time in second. It's mean the flux should be changed with time. The changing magnetic flux, the changing alternative by changing magnetic flux generate होगा, उसी में हमको सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा और हमको वोल्टेज मिलेगा. बट इन केस ऑफ डीसी, व्हेन वी फीड द डीसी वोल्टेज, देन एक फ्लक्स तो जनरेट होगा. दैट फ्लक्स इन स्टेडी इन नेचर. द फ्लक्स इज नॉट द अल्टरनेटिव फ्लक्स. वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है. डी फाइव बाई डी टी मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होता है. तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो इस सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो हमको सेकेंडरी में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा. तो डीसी वोल्टेज देने में जो फास्ट हम लोग को दिखाई देगा, प्राइमरी में वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद भी सेकेंडरी में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा. दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड, वी नो current is equal to V by Z. Z is the impedance. Impedance mean V by R plus XL plus XC. XL mean inductive resistance and XC मतलब कैपेसिटिव रेजिस्टेंस. तो ट्रांसफार्मर का जो कॉइल होता है वो कॉइल का इंडक्टिव रेजिस्टेंस बाय XL बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है. सपोज वी आर फीडिंग 1100 वोल्ट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वी आर गेटिंग 230 वोल्ट. The primary winding resistance is 1 ohm and the primary winding XL mean inductive resistance is approx 20 ohm. So the primary current will be, so the primary current suppose I, so primary current I will be 1100 volt by 21 ampere is equal to approx 52 ampere. But we know the presence of reactance and capacitance is only in AC circuit. For DC circuit, there is no capacitance and inductance effect. So when we feed the DC 1100 volt, now we are feeding 1100 volt DC. So DC में कोई reactance नहीं होगा, तो सब current will be in case of DC only 1100 by 1 is equal to 1100 ampere. So a huge primary current will flow. It will act as a short circuit and a huge primary current will flow. And it will damage the insulation welding, damage the winding and saturate the core, and core will be saturated. So when we feed the DC voltage instead of AC voltage in a transformer,
there is no alternating magnetic flux will generated. Due to non-availability of alternating magnetic flux, no EMF will be generated in secondary and will not get any voltage in secondary. And second is, the primary winding will act as a short circuit, and high primary current will flow through the primary winding. It will damage the primary winding, it will damage the insulation, and the transformer core will be saturated, and ultimately the transformer will be burned out. So we should not inject any DC voltage in any transformer for any type of operation, for any type of experience. If we inject DC voltage instead of AC, the transformer will be burned out. Now in coming, what happened if 50 Hz design transformer is run in 60 Hz system? So we know the transformer is a flux generated by phi, that is directly proportional with voltage and inversely proportional with frequency. The flux is the ratio of voltage and frequency. It is directly proportional with voltage and inversely proportional with frequency. So when we use 60 Hz frequency in 50 Hz system, suppose this transformer is designed for 50 Hz, now we inject the 60 Hz frequency, 60 Hz. तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा हो जाएगा, लेस फ्लक्स विल बी जनरेटेड. V बाय F का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा. फ्लक्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद फ्रीक्वेंसी. जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा, जनरेटिंग फ्लक्स इन द ट्रांसफॉर्मर विल गेटिंग लेस. तो जब लेस फ्लक्स जनरेट होगा ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर का एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा. ट्रांसफॉर्मर रनिंग चलते रहेगा, बट ट्रांसफॉर्मर का एफिशिएंसी फ्रॉम द डिजाइन एफिशिएंसी से कम हो जाएगा. Now I am coming to the vice versa. When 60 Hz design transformer is used in 50 Hz, similarly phi directly proportional with voltage and inversely proportional with frequency. Now frequency is getting reduced to 50 Hz. So क्या हुआ, ज्यादा फ्लक्स जनरेट होना स्टार्ट करेगा. The flux will be generated more. तो ट्रांसफॉर्मर जब ज्यादा फ्लक्स जनरेट होना स्टार्ट करेगा, ट्रांसफॉर्मर कोर विल बी सैचुरेटेड एंड द ट्रांसफॉर्मर विल बी डैमेज. सो जब मैं लोअर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर को हायर फ्रीक्वेंसी में यूज करूंगा, देन ट्रांसफॉर्मर का एफिशिएंसी विल बी गेटिंग लेस, बट ट्रांसफॉर्मर विल रन सेफली. But vice versa, when we used higher design transformer to lower frequency, there is generated extra flux. The generating flux quantity will be more, and the transformer core will be saturated, and transformer will be damaged.